I just thought to balance all the equations given in the worksheet so that when you're downloading them, when you're just watching this video lecture, it walks you through all the equations that are given in the worksheet. I mean, there are some certain conditions where sometimes it becomes difficult for you to understand and balance the equation. So there are some equations given in the in the worksheet again and again just to get it practice. So I just thought to balance all the equations in the rest of the pages. We are going to start with the page number, I guess, page number two. Okay, so if you guys holding the page number two and right in front of you, you can start with me right now, or you can download from the link in our minute. Just look at this equation number one. But the equation number one contains two nitrogen on the left, two hydrogen on the left, and some three nitrogen on the right. आपको इनिशियली याद होगा कि मैंने ये बात बताई थी you need to convert any odd number into even before we can start balancing the equation. So what we do is to bring 2 besides this NH3 makes it 6 hydrogen atoms on the right and 2 nitrogen on the right. तो जब तुम्हारे पास 6 हाइड्रोजन हो जाएंगे तो तुम अगर यहाँ पर 3 लिखोगे तो लेफ्ट साइड पर भी 6 हो जाएंगे. 3 into 2 is 6, 2 into 3 is 6, 2 into 3 is on the right side and 3 into 2 on the left side. At the same time, the two nitrogen atoms which you can actually locate them on the right side. जो तो आपने 2NH3 लिखा है उसमें दो नाइट्रोजन एटम्स हैं और वो दो नाइट्रोजन एटम्स ऑलरेडी आपकी इक्वेशन में गिवन है. सो इफ वी जस्ट रियली नीड टू पुट अ नंबर वी जस्ट पुट वन एंड दिस इज नॉट बेसिकली केस. आप कभी भी इन एग्जाम्स में वन नहीं लिखते. तो आई एम जस्ट राइटिंग इट टू जस्ट लेट यू नो दैट दिस स्पेस एक्चुअली ऑक्यूपाइज वन. ठीक है ना. तो तुम्हें वन लिखने की जरूरत नहीं है. Question number two is KClO3. We have actually done it above in some series और उसमें हमने इसको बैलेंस किया हुआ है. सो आई होप कि आप लोग उसको जल्दी अंडरस्टैंड करोगे. देखो लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ है KClO3 दैट मेक्स इट 3 ऑप्शन ऑन द राइट. तो मैंने लेफ्ट तो मैंने आपसे ये बात कही थी कि जब भी आपके पास कोई ऑड क्वांटिटी गिवन होगी आप उसको मल्टीप्लाई बाय 2 करवाएंगे just to make it even. So if I'm just putting 2 besides KClO3 that makes it 6 option on right. So 6 oxygen on the left and just 2 on the right. So we're not going to balance them because क्योंकि वो element है at the end, so it can be balanced at the end. So KClO3 में आपके पास 2 potassium, 2 chlorine and 6 oxygen atoms and just look at this KCl. अगर मैं यहाँ पर 2 लिख दूँ तो इसमें potassium Cl दोनों balance हो जाएंगे at the same time, right? You can just relate it to the left side. And then जो 6 oxygen atoms हैं उसको मैं balance करने के लिए यहाँ पर लिखता हूँ 3 ताकि 3 into 2 क्या हो जाए 6. Equation number 3 is NaCl reacts with F2. तो नहीं क्या क्या बन रहा है इसमें. ठीक है. NaCl plus F2 कोई नंबर ऐसा नहीं है. You just don't need to worry about any kind of subscript or superscript or whatever the number. आप सिर्फ इस पॉइंट को चेक करें कि राइट साइड पे आपके पास Cl के साथ 2 लिखा हुआ है. Just look at this one. We've got 2 Cl. Fine. So Cl की source left side पे सिर्फ एक है, that is NaCl. So we cannot bring any kind of Cl into the equation from somewhere just to get balance. तो अब क्या करोगे. आप सबसे पहले यहाँ पे 2 लिखोगे ताकि आपका Cl बैलेंस हो जाए. Which was actually initially an odd thing. कि Cl राइट पे 2 है लेफ्ट पर 1 है. सो कहाँ से आ रही है Cl. तो Cl की सोर्स एक थी ना NaCl. So we put 2 with NaCl makes it 2 Cl on the left and 2 on the right. So Cl is completely balanced. You don't need to worry about it. Now look at this point. Na becomes 2, right? And since we have got only one compound on the right side of sodium, तो हम क्या करेंगे 2 लिख देंगे NaF के साथ just to make it balance for sodium. तो सोडियम भी बैलेंस हो गया, क्लोरीन भी बैलेंस हो गया. And again, a surprising fact is we have actually balanced another element unintentionally, that is chlorine. Because in 2NaF, we have got 2 chlorine on the right, and at the same time, 2 chlorine is already given on the left side. So there is no number should be put on along with this F2. So I'm just writing one, ताकि मैं आपको बता दूं कि मैंने क्योंकि ब्लैंक इसमें दिया हुआ है तो you can just write one. Otherwise, you don't need to write this one in your exams, you know. और राइट साइड पर भी Cl के साथ Cl2 के साथ 1 आएगा. I hope you guys understand. अच्छा 4 इक्वेशन नंबर 4 इज H2 and O2. बच्चों वाली इक्वेशन है बिल्कुल ऐसे ही बच्चों को दी गई है. H2 and O2 बच्चों और से सुनना. H2 तो राइट साइड पर बैलेंस है, O2 बैलेंस नहीं है, राइट. तो हमारे पास राइट साइड पर एक ही कंपाउंड है ऑप्शन का. वी नीड टू पुट सम नंबर अलोंग विद इट जस्ट टू गेट इट बैलेंस. तो हम क्या लिखते हैं इसको 2. अच्छा जब मैं 2 लिखता हूँ तो क्या होता है कि 2 into 1 यानी कि ऑप्शन का सबस्क्रिप्ट कुछ नहीं है तो अंडरस्टूड है कि 1 होगा. तो इसमें H2O में आपके पास हो जाते हैं 2 ऑक्सीजन. So you've got 2 oxygens on the right, 2 on the left. हाइड्रोजन चेक करोगे तो आपको अंदाजा होगा कि H has become actually 4. 2 into 2 is 4. तो हम इसको क्या करते हैं
हम इसको 2 करने के लिए, सॉरी 4 करने के लिए यहाँ पे 2 पुट कर देते हैं. That makes it 2H2 makes it 4 hydrogen on the left and 4 on the right. So sometimes we balance the atoms, sometimes we balance the, you know, ions. And another equation what you can see is equation number 5 and 6 is about balancing the ions again. Ion exchange method है, उसी से equation आप बना रहे हैं, so don't need to worry about, you know, individual atoms. We can balance collectively. uh, O2, sorry, not O2, that's OH2. That's happened to my eyes. OH2, and on the right side we don't get any OH2, but we can get actually Cl. Cl को check करें. Cl the compound is Cl and that is containing only one Cl. Look on the right, we are containing two Cl in the PbCl2. So somewhere back of the mind we can get this quantity. Here left side पर at least two Cls होने चाहिए. Just to get them two on the left, we need to put two beside that Cl. अब अगर आप गौर करो तो आपने जो टू लिखा है ये टू एच के साथ भी है और सी एल के साथ भी है, राइट. तो आपने राइट साइड पे तो सी एल को आपने बैलेंस कर दिया, लेफ्ट साइड पे भी टू सी एल है, राइट साइड पे भी टू सी एल है. इसी तरह से आपके पास जो पीवी के यूनिट्स हैं, पीवी के यूनिट्स भी ऑलरेडी बैलेंस है, दैट इज ऑलरेडी बैलेंस. तो अब जो मैं बात आपको बताने लगा उसको जरा गौर से सुनिएगा. मोस्ट ऑफ द टाइम वी गेट द बैलेंस आयन एक्सचेंज, यू नो, इट्स वेरी easy for us. The reason कि जितने ions होते हैं वो सब नजर आ रहे होते हैं. But remember one thing, there are some conditions कि जिसमें आपके पास ions are combined to form a covalent compound. You're not going to figure them out. तो अब ये जो आपके सामने remaining component है उसको जरा देखो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ. Force है, बहुत force है. This hydrogen combines with this OH to form H2. तो आपको ion इसलिए नजर नहीं आ रहा. इससे पहले जितनी इक्वेशंस हमने की हैं उन सब में आपके पास पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस कलेक्टिवली गिवन होते थे. वी कुड एक्चुअली काउंट देम एंड बैलेंस देम. आपका प्रॉब्लम ये है कि इसमें आपके पास जो H और OH है that is combining to give a covalent compound. So you're not going to see any H positive and OH negative on the right side. So it's basically H2O itself. तो अब इसको बैलेंस करने के लिए आप क्या करते हो? बहुत सिंपल सी स्ट्रैटेजी है, ठीक है, बहुत से सुनिएगा, बहुत सिंपल है. आपके पास दो हाइड्रोजन ऑलरेडी है, दो हाइड्रोजन यहाँ से आ रहे हैं, because this two is basically given for this hydrogen and for this oxygen as well. So when we say that we have got two OH units, so we have got two oxygen along with two hydrogen atoms. So we have actually have two with Pb and two with HCl. So we've got total of four hydrogen atoms on the left side. तो अगर इस फोर को यानी कि दो हाइड्रोजन यहाँ से निकाल दो और दो हाइड्रोजन यहाँ से निकाल दो, इस फोर को बैलेंस करने के लिए अगर मैं यहाँ पे टू लिख दूँ तो फोर हाइड्रोजन तो बैलेंस हो जाएंगे, हाइड्रोजन बैलेंस हो गए. लुक एट दिस पॉइंट, ऑक्सीजन भी बैलेंस्ड हो गया बाय डिफॉल्ट. कैसे हुआ और चीज नहीं. This two is basically with the oxygen as well. Two oxygen हो गए लेफ्ट साइड पर, and this two is basically with the oxygen as well. Two on the right. तो sometimes जब आप इक्वेशन बैलेंसिंग कर रहे होते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम जब आप इसको आयंस मेथड से बैलेंस कर रहे होगे कलेक्टिवली तो आपकी इक्वेशन बहुत इजीली बैलेंस हो जाएंगी. आई जस्ट नीड टू डिस्कनेक्ट एट दिस पॉइंट बिकॉज आई नीड टू कनेक्ट माय चार्जर. सॉरी 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 सॉरी. So holding it here, ठीक है. Meet you in the next video lecture.